Ashok purchased pens and pencils in the ratio of 2:3 during his first visit and paid 86 rupees to the shopkeeper. ठीक है, सेकेंड विजिट में पेन्स एंड पेंसिल्स को 4:1 रेशियो में खरीद के 112 रुपीज़ पे किया. कॉस्ट ऑफ द पेन एज वेल एज पेंसिल इज इन रुपीज़ पॉजिटिव इंटीजर. ठीक है. इफ अशोक परचेस्ड 4 पेन्स ड्यूरिंग हिज सेकेंड विजिट देन द अमाउंट पेड इन रुपीज़ फॉर द पेन्स ड्यूरिंग द सेकेंड विजिट. ठीक है. वी नीड टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ पेन्स बॉट एंड ऑल्सो कॉस्ट ऑफ द पेन ईच. दैट विल गिव मी द आंसर. राइट. मैं पेन्स और पेंसिल्स का बात करना है यहाँ. ये नंबर ऑफ पेंसिल्स है, लेट मी से कॉस्ट है. ठीक है. सो ए रुपीज़ विद द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, बी रुपीज़ विद द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल. ही इज़ टेलिंग ही बॉट 2:3 रेशियो, मतलब 2x पेन्स हो तो 3x पेंसिल्स होगा. एक पेन का कॉस्ट ये रुपीज़ हो तो ये होगा 2x इंटू ये होगा 3x इंटू बी. राइट. टोटल मनी ही स्पेंट इज 86. नाउ इन द सेकेंड केस, पेन्स, pencils, he has given me during the second visit he bought 4 pens, right, and ratio is 4:1. That means he has to buy 1 pencil. Cost of the pens will be 4a, cost of the pencil will be 1b, and cost of the whole thing is 112. Right. Now I need to find this 4a. I just want 4a. If you clearly observe here, दोनों में I can take x common. It will become 2a plus 3b is equal to 86. Here 4a plus b is equal to 112. Now he is telling me that amount paid in rupees for the pens during the second visit. 4a चाहिए, मतलब I need to find out a, right? And number of pens and number of pencils should definitely be in integer. Now I'll try taking random values for x and then try to find out the value of a. If both a and b come as integers, because he is saying cost is integers, positive integers, then I'm sorted, right? If I take x equal to 1, it implies 2a plus 3b is equal to 86. Now here I have 4a plus 2b is equal to, 4a plus b is equal to 112. To simplify, I'll multiply this by 2 because I'm eliminating a, right? Or if I can directly find out a by going in the reverse, 3b करके इसको eliminate कर सकते हैं. ठीक है. इसको into 3 करता हूँ. Why am I doing it? I want to eliminate b. 12a plus 3b is equal to 336. इसमें से इसको हटाना पड़ेगा. 2a plus 3b is equal to 86. क्या आएगा? माइनस 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 10a कैंसिल, 250 आएगा, तो a is equal to 25 आएगा. ये 25 आया, सो 25 यहाँ रख दिया तो 100 आएगा, which implies b is equal to 12. By the way, both are integers, मतलब my x should be correct. Now what is he asking? Then the amount he paid in rupees for the pens. What is the amount for this? Which is 4a. 4 into 25, which is 100. Right. Now I don't need to check for by giving x equal to 2 because he is asking in theta based question. That means there is only one answer. That one answer I got, so that should be my answer.